व्हाट डू यू थिंक, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को रोक रही है एक बेटर वर्ल्ड बनाने में या फिर वसुधैव कुटुंबकम बनाने में? आप भी सोचते होगे, आप ऑब्जर्व करते होगे लोगों को, तो ऐसी क्या चीज़ें लगती है आपको कि अगर ये थोड़ी ठीक हो जाए या फिर इसमें लोगों को चेंज लाए जो और बेटर कर सकता है वर्ल्ड को? आई डोंट नो बट मुझे बस चाय प्लेसेस बड़ा फ्रेमवर्क लगता है, सिंपल लाइक वहाँ बैठे अगर देखे तो इतना डिफरेंट पीपल आएंगे आपके बगल में, बैठेंगे आपसे, आप हाय भी बोलेंगे तो हाय बोलते हैं, तो वो आप कुछ भी पूछेंगे आप कहाँ से है तो बताएंगे, कई बार ऐसे स्टोरीज है, वो कई दूसरी सिटी से आया है ना, ऐसा विजिटर है, वो आके चाय प्लेस में बैठ जाता है और चाय पीता है, कोई नाश्ता करता है, तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर करता है कि उनके लिए ये सिटी क्या है, अर्बन सिटी में। तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है कि हम अगर फैमिली समझना है, सबसे पहला फैमिली आता है खुद का फैमिली, है ना, जहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ सिबलिंग्स के साथ यू फील द कनेक्शन, इजंट इट? So but that is more like an emotional connection where you all the time share your problems, everything, happiness, everything. But what about the community when it comes to which is far from your family connections? तो वहाँ आप कैसे इस चीज़ को देख सकते हो, isn't it? और हम जो अपना कल्चर में जो है ऑलरेडी, जो प्रैक्टिस हमें बता रहा है कि जैसे कि मैं काफ़ी एम्फसाइज़ करता हूँ, मेरा जो फ्रेमवर्क है और जो मेन मोटिवेशन है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये एक चीज़ समझाता है कि ये क्यों बता रहा है कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हमें क्या ज़रूरत है ना, ऑलरेडी वी हैव वन फैमिली, देन व्हाई? सो ये जो द ट्रूथ इंटरकनेक्टेड ऑफ ऑल बीइंग्स, हम लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमें लगता नहीं है कि हम कनेक्टेड, बट वी आर। अगर आप देख सकते हो कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग एंक्सियस थे कि इससे आएंगे उससे आएंगे, बट व्हाट इज़ दैट? सो वी वेल कनेक्टेड ईच अदर इन सम सेंस। अगर आप फैमिली में एक अगर सैड है, then we share that sadness, isn't it? So it's a very we can conduct that pain is shareable, even happiness, अगर कोई घर के अंदर अगर हैप्पी है तो एंटायर फैमिली सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस। सो दिस इज, ये मेरे को समझ में आया वसुधैव कुटुंबकम में, समथिंग इट शुड बी शेयरेबल प्रैक्टिस अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। तो लोग अपनी जैसे आपने री इमेजिन किया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को, वसुधैव कुटुंबकम को और भी आइडियोलॉजीज को, देन हाउ वन कैन री इमेजिन बाई हिम और हर सेल्फ? मतलब जैसे मैं हूँ, तो आप एक प्रोसेस से गुजरे हो री इमेजिनेशन के, जहाँ पे आपको पता है कि मैं ऐसे ऐसे री इमेजिनेशन कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि और ऐसे लोग सोचे इस आइडियोलॉजी पे और आगे बढ़े, तो वो अपने थॉट प्रोसेस को री इमेजिन कैसे कर सकते हैं? So reimagining is one of the creative practice. You don't need to be an artist. So I really look for alternatives all the time. Okay. I keep thinking diverse perspectives. Okay, this is something everybody understand. What is Vasudhaiva Kutumbakam? What others don't understand, or what others don't see, even I'm not seeing. Is there any possibility? So I can embrace that perspective. So I will think about the simple thing. I'm just building a global community. It's a very simple idea, but how to approach that idea of in a global family, then I come up with my creative practice thought processes over the time, and I build some projects. I choose certain projects which are coming from where I belong. Like Prayagilu is based on my ancestral home. My ancestral home is more than 100 years old. और 2021 में बहुत बारिश गिरा तो टूट गया, तो वो मड हाउस है, उसका जो दीवार है 2.5 फुट की विड्थ में है। इट्स अमेजिंग एंड वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इंटरेक्ट विद द सीजन्स। गर्मी के मौसम में भी वो ठंड रहता है अंदर, सो वो हाउस में
मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, और मैं भी रहता हूँ. ऑलमोस्ट लाइक 5 generations lived in that house. It was a mud house. और इंडिया के जितने मड हाउसेस, इफ आई एम राइट, दे आर शेयर्ड स्पेसेस. वो ऐसा डिवीजन नहीं है कि ये डाइनिंग हॉल, ए किचन, ए चिल्ड्रंस रूम, इट्स गेस्ट रूम, इट्स ए. बट मैं जिस घर पे था, जिस मेरा एंसेस्ट्रल होम, वो एक शेयर्ड स्पेस थी among family. We are sharing that space for food, guest, sleeping in the night. So it is another motivation from another framework to think about how it can be a shared space for the community. So the same, my ancestral house, I converted as a Prayagillu, as a shared space where everybody can share their, knowledge and exchange thoughts, ideas, anything. So where they can connect each other, like I connect with my family every day. So people come here and they can connect each other. And another reason why I think about this project a lot, because it's very biographical art. I witnessed losing my parents in this house when I was 13 and 15 years old. So whenever I look at this house, I feel that sadness, that it's a very dark emotions embedded in those walls. So when it collapsed in 2021, so my practices, which I was doing for long, and my interest inclined towards social practice, where you're using creative arts, creative practice as a medium to bring a social change. So that was the time it happened. This house collapsed due to heavy rains. So one thing came to my mind: art is the way to heal my dark memories. But how I can heal this? The question. So then I restored and reconstructed that house. I kept the old walls, but then I restored as a community place. So today it's a place for the celebration. It's a place for the transformation. It's a place for the knowledge. It's a place for the people where they can connect each other. So it's interestingly, it took another flip side of that. Dark emotions turned into a healing, bright, illuminating. It's a healing process. True. So that's one of the ways I am thinking about Vasudhaiva Kutumbakam. It's not all the time like feel good concept like, oh, we are family. No, there are so many things that we need to think about how you make a family. Now I'm in a process of building a global community, either reimagining this concept of Vasudhaiva Kutumbakam, but the process how you design your projects through creativity and create art as a medium.